Hello everyone, welcome to the fourth lecture of motion in straight line. Today we will discuss the MCQ questions of acceleration. So here in this topic, the first question is the displacement of a body is given to be proportional to the cube of time lapsed. The magnitude of acceleration of the body is displacement. What is saying? Displacement is proportional to the cube of time. Then magnitude of acceleration. Then first of all, what we'll try to find, we'll try to find out the velocity v. Then here in this particular case, v equal to dx by dt. Clear? And if x is proportional to tq, then x equal to some constant time tq, then d by dt of some k tq. So what will be that one? So k into d by dt of dq, so that value will be k into 3 into t to the power 3 minus 1, so it will be 3k t square. तो ये कितना आएगा 3k t square. So velocity is coming out to 3k t square. Then acceleration is how much? Acceleration is nothing but dv by dt. So dv by dt means d by dt of 3k t square. Clear? So 3k is constant, so take it outside. So 3k into d by dt of t square. So here in this particular case, so it will be how much? So 3k d by dt of t square, that means 2 into t to the power 2 minus 1, so it will be 6k t. Clear? That means acceleration is proportional to what? Time. So acceleration is what? Acceleration is proportional to time. So that means acceleration will increase linearly with time, so it increases with time. So option A is the correct. Next, moving to the next question, matching the column type. Clear? Here it is what? It is the matching of column. So in column 1, what it has given? It has given the physical quantities, and in column 2 it is given the formulas. Clear? So physical quantities, what are the physical quantities present over here? Instantaneous velocity, average velocity, instantaneous acceleration, and average acceleration. First of all, we'll define the average velocity. And that is nothing but delta x by delta t. Clear? Displacement divided by time interval. Then from there, what will be the instantaneous velocity? Instantaneous velocity will be nothing but लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0. जब टाइम इंटरवल को हम बहुत ही छोटा कर देंगे एवरेज वेलोसिटी में, तो वो हमें क्या बताएगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. दैट मीन्स लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी. Clear? Delta x by delta t, and that will be nothing but dx by dt. So this is instantaneous velocity. Similarly, what is average acceleration? Average acceleration is nothing but delta v by delta t. Clear? And what will be the instantaneous acceleration? Instantaneous acceleration will be limit delta t tends to 0 delta v by delta t, and that will be nothing but dv by dt. So right now we'll check the columns. So instantaneous velocity, this is instantaneous one, this is instantaneous, that means limit delta t tends to 0 delta x by delta t, this one. And next, average velocity, simply delta x by delta t. This is average by delta x by delta t. And instantaneous acceleration, if we say instantaneous acceleration, then this one, limit delta t tends to 0, and this is limit delta t tends to this one. And average acceleration, then it will be this one. Clear? So that means as बी का कितना हो रहा है? बीपी ए का एस है, एक है, बी का पी है, सी का क्यू चेक करते हैं, सी का यहाँ पे क्यू है, ठीक है, एंड डी का यहाँ पे आर, डी का आर. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट. नेक्स्ट, मूविंग टू द क्वेश्चन, the slope of the tangent drawn on the velocity time graph at any instant of time is equal to slope of tangent drawn on velocity time graph. Okay, so slope of tangent drawn on vt graph.
Okay, let us take the VT graph. Suppose this is velocity that is given in meter per second, and this is time that is given in second. Clear? And let us assume that we are taking a VT graph to be like this. Clear? Then what is the slope of tangent? That means how do we find out the slope of tangent? That means suppose if it is asked to find out the acceleration at any instant of time, so at time t what will the acceleration? So then what we'll do, we'll simply take a point at that point on the curve at that instant of time. उस टाइम पर पॉइंट कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, और उसी पॉइंट पर हमें क्या करना है, उसी पॉइंट पर हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करना है. So this is the tangent. Then what will be the slope of the tangent? That's the slope of the tangent will give us what? So slope of that tangent will give us what? तो वो tangent जो है उसका जो टेंजेंट का जो दो एंड पॉइंट्स है उससे हमें परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करना है. ड्रॉ द परपेंडिकुलर्स ऑन द टाइम एंड वेलोसिटी एक्सिस, and from there what we'll get a triangle. Clear? We'll get a triangle. So let this one be v1 and it will be v2, and here it is t1 and here it is t2. So this particular side will be v2 minus v1, that will be nothing but delta v, and this particular side is t2 minus t1, and that is nothing but delta t. So what will be the slope? Slope will be slope. तो slope यहाँ पे क्या होगा? Slope that is m, that will be equal to tan theta, and that can be written as delta v by delta t. और ये डेल्टा v by delta t अभी हम लोग देखें हैं, ये किसको इंडिकेट करता है? एवरेज एक्सेलरेशन. So here acceleration given velocity, impulse and momentum. So this will be acceleration. So option A is the correct one. Moving to question number 35. So here in question number 35, area under acceleration time graph represents. Achha, okay. Area under acceleration time. What does the area under acceleration time graph represents? So here in this particular case, draw the acceleration time graph first. This is A, that is given in meter per second square, and this is T, that is given in second. So what does this acceleration area under acceleration time graph? So let us take a simplest example of this particular type. It's constant acceleration time graph. So this is constant acceleration. So here in this particular case, when time becomes 0, at time 0 the acceleration is A. When time becomes t, when the time becomes t, acceleration is again A. Clear? That means during the time interval from 0 to t, what will be the physical quantity that will represent below the curve. Clear? So here that means we'll find out the area under this curve. And what does this area under the curve represents? It is that means we'll simply, this is a rectangle. Area means area of the rectangle, and this will be t, and this side, this breadth will be a. So it will be a into t, but a here indicates the acceleration, that is in unit wise it will be meter per second square, and time का यूनिट कितना होता है? सेकेंड. तो सेकेंड विल गेट कैंसिल, सो इट विल बी मीटर पर सेकेंड. सो एरिया यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है? दैट सिंपली इंडिकेट्स द वेलोसिटी. अच्छा, यहाँ पे बट यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी एंड डिस्टेंस तो बिल्कुल नहीं होगा, तो वेलोसिटी इन तीनों में से कौन सा होगा? तो यहाँ पे हमें एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जो एरिया हम निकाल रहे हैं, दैट एरिया वी आर फाइंडिंग आउट ओवर ए गिवन टाइम इंटरवल. एक टाइम इंटरवल पे जब हम निकालते हैं तो वो क्या बताएगा? वो तो वेलोसिटी को इंडिकेट करेगा, बट दैट विल नॉट इंडिकेट द पर्टिकुलर वेलोसिटी. दैट विल सिंपली दैट विल इंडिकेट द चेंज इन वेलोसिटी. क्लियर? इनिशियल वेलोसिटी, दैट मीन्स that will be the velocity at the instant when our time starts, when our observation starts. And final velocity, that means when the final time at that we this is a particular velocity, these two are particular velocity, but here change in velocity that simply tells us about over a given time interval.
So here option C will be the correct. Moving to the next question. Here in this particular case, which of the following statement is not correct regarding the motion of a particle in straight line? One particle is moving in straight line path, motion in straight line, then which one will not be the case? Okay. xt graph is a parabola if motion is uniformly straightened. So here in this particular case, suppose we'll draw the curve position time graph. Here in this particular case, x is given in meter and t is given in second. So it is saying that it's coming out to be parabola kind of thing. So here if motion is uniformly accelerated, that means here it's a should be constant. That means here in this particular case the velocity should increase at a constant rate. Clear? Velocity should increase at a constant rate. तो velocity increase होगा constant rate में, तो कैसे? For example, suppose here suppose at this particular instant, let what will be the velocity? तो इस केस में हमें क्या करना है? तो इस टाइम t1 पर वेलोसिटी कितना होगा? तो इस ये जो एक पॉइंट, जस्ट टेक ए पॉइंट ओवर द कर्व एंड ड्रॉ ए टेंजेंट एंड देन फाइंड आउट द स्लोप. सिमिलरली एट टाइम t2, मान लो कि टाइम t2 है, टाइम t2 पर टाइम t2 जब होगा तो उस समय वेलोसिटी कितना होगा? तो टाइम t2 पर एक पॉइंट हमें कर्व के ऊपर लेना है एंड आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट. तो ये टेंजेंट हुआ, उसका स्लोप. तो ये जो वेलोसिटी मान लो कि यहाँ पे v1 हुआ और यहाँ पे v2 हुआ, ऑब्वियसली v2 इज मेकिंग मोर एंगल एज कम्पेयर टू द v1, दैट मीन्स v इज इंक्लाइंड मोर एज कम्पेयर टू v1, दैट मीन्स slope in the second tangent will be more than the first, that means v2 is greater than v1. तो इस वाले पर्टिकुलर केस में क्या होता है, अगर v2 यहाँ पे कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होता है तो जनरली क्या होता है, वो पैराबोला में ही होगा. क्लियर? तो इसलिए xt ग्राफ इज ऑलवेज पैराबोलिक नेचर इफ मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड. नेक्स्ट ऑप्शन बी में क्या होगा? ऑप्शन बी में यहाँ पे क्या बोल रहा है? vt इज ए स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस. अच्छा, पहले तो ग्राफ को हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं, जैसा बोला गया वैसे हम पहले ग्राफ को प्लॉट कर लेते हैं. तो vt ग्राफ, ये v है और ये t है, that is given in meter per second and that is given in time is given in second. So it is a straight line inclined to time axis. Okay. If motion is uniformly accelerated, तो यहाँ पे मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ए कांस्टेंट होगा क्या? ऑब्वियसली इन दिस पर्टिकुलर केस तो स्ट्रेट लाइन है, vt ग्राफ है, तो उसका स्लोप हमें क्या बताएगा? एक्सेलरेशन देगा, और एक्सेलरेशन और वो भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, तो दिस विल बी द करेक्ट. नेक्स्ट, xt ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन inclined to time axis. xt graph, once again is saying you have to take a xt graph. xt graph is a straight line. xt graph is a straight line inclined to time axis. xt graph is a straight line and that is inclined to time axis. ये कुछ एंगल बना रहा है यहाँ पे. इफ मोशन इज यूनिफॉर्म एज एक्सेलरेशन इज 0. अच्छा, मोशन यूनिफॉर्म है तो xt ग्राफ में अगर स्ट्रेट लाइन टाइम एक्सिस मतलब इंक्लाइंड है, जो ग्राफ है वो अगर स्ट्रेट लाइन है और वो भी इंक्लाइंड है टाइम एक्सिस के साथ, तो उस केस में वो क्या बता रहा है? वो हमें यूनिफॉर्म मोशन को इंडिकेट कर रहा है. यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, तो वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा? वहाँ पे 0 होगा. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. vt graph. Next, what is saying? It is saying about the vt graph. Clear? So here in this particular case, vt graph. So v and t origin. vt graph is a parabola if motion is uniform. अच्छा, motion uniform, vt graph is a parabola. So parabola टाइप का बोल रहा है, बट यहाँ पे बोल रहा है कि वो मोशन यूनिफॉर्म होगा. क्लियर? तो vt ग्राफ जब यूनिफॉर्म मोशन में vt ग्राफ क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन में vt ग्राफ हमारा कैसे रहता है? दैट विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, बट हियर इट इज सेइंग पैराबोलिक नेचर. एंड यहाँ पे vt ग्राफ ये अगर पैराबोला होगा तो इसमें एक्सेलरेशन यहाँ पे इंक्रीज होगा.
और वो भी कांस्टेंट रेट में, दैट मीन ए शुड नॉट बी कांस्टेंट। ए तो कांस्टेंट भी नहीं होगा, मतलब यही यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, ए ये यहाँ पे जीरो नहीं होगा। क्लियर, एक्सीलरेशन इज नॉट जीरो ओवर, बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा वेलोसिटी, यहाँ पे हर एक टाइम पर वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी हियर, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, देन एक्सीलरेशन इज जीरो। क्लियर, तो यूनिफॉर्म मोशन में ठीक है वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, एक्सीलरेशन जीरो होगा, ये ठीक है, बट it is a straight line parallel to time axis, it is not parabolic, that means this is not correct। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कौन सा not correct regarding the motion, that means option D will be the case। नेक्स्ट इज मैचिंग द कॉलम टाइप। कॉलम 1 में हमें ग्राफ प्रोवाइड किया गया है और कॉलम 2 में यहाँ पे हमें ग्राफ का जो नेचर है वो बताया गया है। क्लियर, कौन सा नेचर यहाँ पे सही तरीके से फिट होगा उस ग्राफ के लिए। सो मूविंग विथ द केस फर्स्ट वन, तो यहाँ पे जो केस, अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स वाइज भी हम उसको चेक कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक्स वाइज, तो फर्स्ट में क्या बोला गया है, ये एक ऐसा ग्राफ है जिसमें वेलोसिटी पॉजिटिव होगा और एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा। ऐसा ग्राफ कौन सा है इसमें, इनमें से जो जहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव होगा और एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा थ्रू आउट द मोशन। अच्छा, पहला ग्राफ में वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव वेलोसिटी, यहाँ पे तो जीरो होगा इस पॉइंट पर, तो ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे स्लोप अगर हम निकालेंगे तो ये जीरो होगा। क्लियर, तो ये नहीं होगा। देन मूविंग टू बी में भी हमें यहाँ पे इस जगह पर वेलोसिटी जीरो मिल रहा है। क्लियर, और यहाँ पे तो वेलोसिटी हमारा जो स्लोप है, इस कर्व का जो स्लोप है नेगेटिव आ रहा है। यहाँ पे इस जगह इसमें क्या है, वेलोसिटी हमारा हर जगह यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, बिकॉज हाउ विल यू फाइंड आउट द वेलोसिटी ओवर फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो हमें क्या करना है, किसी भी टाइम पर एक पॉइंट लेना है, पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है और उस टेंजेंट का हमें क्या करना है, स्लोप निकालना है। तो यहाँ पे हर जगह हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी पॉजिटिव मिलेगा। क्लियर, यहाँ पे हर जगह क्या होगा, वेलोसिटी हमें पॉजिटिव मिलेगा। तो या इसमें हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे ये वाला जो कर्व है, पहला वाला जो कर्व है, जो कर्व नंबर डी है। क्लियर, इसमें एक्स एंड टी बताया गया है एंड दैट कर्व इज कमिंग टू बी लाइक दिस। तो इसमें मान लो कि ये टाइम है t1 पर वेलोसिटी टी1 टाइम वक्त वेलोसिटी कितना होगा, लेट इट बी v1, व्हेन टाइम इज t2, वेलोसिटी यहाँ पे कितना होगा, वेलोसिटी इस पॉइंट पर ये होगा v2। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या है कि v1 इज ग्रेटर देन v2 बिकॉज स्लोप एट टाइम t1 is greater than slope at time t2। वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन द फाइनल वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी यहाँ पे कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है तो उसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक्सीलरेशन जीरो होगा, मतलब नेगेटिव होगा, जीरो तो नहीं होगा, एक्सीलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। दैट मीन्स जो पहला वाला जो स्टेटमेंट है कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट इज मैचिंग विथ डी के साथ मैच कर रहा है। नेक्स्ट मूविंग टू द सेकेंड वन, ऐसा ग्राफ, फाइंड आउट दिस द नेचर ऑफ द ग्राफ वेयर पोजीशन इज ऑलवेज पॉजिटिव थ्रू आउट। पोजिशन जो ऑब्जेक्ट का है वो हमेशा पॉजिटिव होगा एंड हैज ए पॉइंट विद वेलोसिटी जीरो एंड ए पॉइंट विद एक्सीलरेशन जीरो। अच्छा, हमेशा पॉजिटिव पोजिशन होगा। इन द फर्स्ट केस यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो पोजिशन विद यहाँ पे इस टाइम पर पोजिशन नेगेटिव है, जीरो है, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। यहाँ पे पोजिशन हमेशा पॉजिटिव है। क्लियर, यहाँ पे पोजिशन हमेशा पॉजिटिव है, यहाँ पे पोजिशन हमेशा, ये तीनों आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन को हम चेक करेंगे, है जो पॉइंट विद वेलोसिटी जीरो। यहाँ पे उस ग्राफ में एक पॉइंट होगा जहाँ पे वेलोसिटी जीरो होगा। तो लेट में, अच्छा ये बड़ा, तो ये ग्राफ तो और दोबारा हम देखेंगे ही नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी हो चुका है। क्लियर, तो ये दोनों ग्राफ अभी बचा बी एंड सी, ये दोनों ग्राफ। क्लियर, तो इन दोनों में से ये जो सेकंड का जो है वो ए के साथ मैच नहीं करेगा, तो बी सी में से किसके साथ मैच करेगा, तो उसमें सेकंड जो कंडीशन बताया गया है जे पॉइंट विद वेलोसिटी जीरो, जिसमें वेलोसिटी यहाँ पे जीरो होगा, तो वेलोसिटी यहाँ पे इस जगह पर जीरो हो सकता है बिकॉज यहाँ पे स्लोप क्या होगा, स्लोप यहाँ पे जीरो मिलेगा। क्लियर, तो एंड यहाँ पे कहीं पे ऐसा नहीं है कि जहाँ पे वेलोसिटी आपको जीरो मिलेगा,
क्लियर, क्योंकि यहाँ पे स्लोप आपको नेगेटिव मिल रहा है, सो दैट मीन्स दिस वन मैचेस, बी मैचेस विथ क्यू। नेक्स्ट मूविंग टू द थर्ड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट में यहाँ पे क्या बताया गया है, जो ग्राफ होगा उसमें एक पॉइंट दैट हैज ए पॉइंट विथ जीरो डिस्प्लेसमेंट फॉर टी ग्रेटर देन जीरो। एक ऐसा ग्राफ जिसमें कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। तो इसमें पहला बचा कौन सा ग्राफ बचा, 1 A and C ग्राफ। तो ये को चेक कर लेते हैं कि इसमें डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है। क्लियर, इस टाइम पर, ये वाला टाइम पर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, कहाँ पे है डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे जीरो पे। क्लियर, तो फाइनली एंड तो यहाँ पे ए विल मैचेस विथ आर, ए यहाँ पे आर के साथ मैच कर रहा है। तो फाइनली बच्चा है कौन सा, एस किसके साथ मैच करेगा, तो ऑब्वियसली चेक कर लेंगे यहाँ पे एस किसके साथ मैच करेगा, तो सी के साथ ऑब्वियसली मैच करेगा, तो वी नेगेटिव है। ऑब्वियसली ये जो कर्व है इसमें कोई भी पॉइंट आप ले लो, इसमें वेलोसिटी आपका नेगेटिव है। ये जो कर्व है here in this particular curve, here it is position and time, and in this particular case ये जो कर्व है वो कुछ ऐसा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मान लो फॉर ए टाइम t1 एंड टाइम t2। क्लियर, एट टाइम t1 what will be the velocity, so draw a point at that particular time and draw a tangent। एक टेंजेंट हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है। सिमिलरली एट टाइम t2 पर एक पॉइंट हमें कर्व के ऊपर ड्रॉ करना है एंड ड्रॉ ए टेंजेंट, एक टेंजेंट हमें ऐसे ड्रॉ करना है। क्लियर, सो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा इस टाइम पर t1 पर वेलोसिटी v1 है, t2 पर वेलोसिटी v2 है, एज्यूम कर लो। क्लियर, टेंजेंट थोड़ा ऐसा रहेगा। सो यहाँ पे जस्ट एज्यूम कर लेते हैं, तो वेलोसिटी व्हिच वन विल बी ग्रेटर, तो v1 मैग्नीट्यूड वाइज v1 जो है वो यहाँ पे क्या है, टाइम के साथ थोड़ा ज़्यादा इंक्लाइंड है। क्लियर, टाइम एक्सिस के साथ थोड़ा ज़्यादा इंक्लाइंड है एज कम्पेयर टू v2। तो मैग्नीट्यूड वाइज इट विल बी, लेट इट बी 20, तो इसको मान लो कि ये 10 है। तो बट ये स्लोप नेगेटिव आ रहा है, तो -20 और ये -10। क्लियर, तो व्हिच वन विल बी ग्रेटर, सो v2 विल बी ग्रेटर देन v1। क्लियर, सो जब जैसे जैसे टाइम एज द टाइम passes, so velocity increases। क्लियर, velocity increases, that means here acceleration should be positive, so then only velocity will increase। clear, so here in this particular case option जो graph C will matches with A, so A R matching is A matches with R, B matches with Q, A matches with R, B matches with Q, A R B Q, A R B Q, A R B Q, C S D P should be, then C S should be matched with S and D should match with P. Okay, then it is correct, option D is correct. Okay, moving to question number 38. Here in question number 38, what it is saying is that a particle moving along a straight line has a velocity v meter per second when it cleared a distance of x meter. Okay, then two are connected by the relation v equal to under root 49 plus x. So given the relation is v equal to under root 49 plus x. Clear, so when its velocity is 1 meter per second, its acceleration is, so what is saying, जब इस velocity, इस मोशन में जब वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड होगा तो एक्सीलरेशन कितना होगा. क्लियर, सो वेलोसिटी हियर दिस पर्टिकुलर वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो हमें एक्सीलरेशन पूछा गया है, तो एक्सीलरेशन किसका फंक्शन होना चाहिए, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक्सीलरेशन आप ऐसे निकालो कि वो वेलोसिटी का फंक्शन हो, ताकि जब वेलोसिटी हम 1 मीटर पर सेकेंड उसमें पुट करें तो वो एक्सीलरेशन हमें पर्टिकुलर वैल्यू बताएगा. सो वी नीड द वेलोसिटी टू बी ए फंक्शन ऑफ v. So let us find out. So velocity, so here in this particular v is a function of x, so we want to find out the velocity, acceleration is a function of v. So we know a equal to dv by dt, ये उसका जनरल फॉर्मूला है. क्लियर, simultaneously we also know that v is equal to dx by dt, that implies
dt is equal to dx by v. So just put this value over here. Then what will be the a is equal to dv by dt का वैल्यू कितना होगा dx by v. So it will be v dv by dx. So finally a we are getting v dv by dx. Here this is the case. So just then find out the acceleration directly. A is equal to v is given this one from here. So a equal to v dv by dx. So how much will be getting? So v is 49 plus x root into d by dx of 49 plus x to the power 1 by 2. Let it be 1 by 2. Clear? So how much will be getting? 49 plus x root. अच्छा, इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना होगा? हाफ इंटू 49 प्लस एक्स होल टू द पावर 1 by 2 minus 1 into d by dx of 49 plus x. So how much that will be coming out to be? So 49 plus x to the power x root, and here it will be half into 49 plus x whole to the power minus 1 by 2 into d by dx of 49 is 0 and x is 1, so it will be into 1. So how much will be getting? 49 plus x root of 49 plus x into 1 by 2 under root 49 plus x. So these two get cancelled out. So finally acceleration is coming out to be half, that is 0.5 meter per second square. So here in this particular case we have to check the options. Here in this particular case acceleration is coming out to be constant throughout the motion. That means at any velocity it will remain same. So it is coming out to be 0.5. Here option D is the correct one. Next, moving to the next question. In question number 39, a particle moves rectilinearly. Its displacement x at time t is given by x square equal to a square a t square plus b. डिस्प्लेसमेंट जो टाइम का फंक्शन है यहाँ पे इस फॉर्मेट में दिया गया है, where a and b are constants, the acceleration at time t is proportional to टाइम t में जो एक्सेलरेशन होगा वो किसके साथ प्रोपोर्शनल होगा, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है. सो हियर इन दिस पर्टिकुलर केस लेट अस राइट द इक्वेशन फर्स्ट. एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस बी, एंड यहाँ पे हमें पूछा गया है एक्सेलरेशन. ओके, so finally how will you find out the acceleration if displacement is given? Then we know that we have to differentiate it twice. So first of all, if we differentiate this one in this particular case, then differentiating once, एक बार अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना होगा? 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी. तो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम के हिसाब से हमें इसको डिस्पेंसेट करना है. सो इट विल बी हाउ मच? राइट हैंड साइड को हम टाइम के हिसाब से डिस्पेंसेट करेंगे तो कितना होगा? ए इंटू 2t प्लस बी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा? इट विल बी 0. सो फाइनली हाउ मच वी आर गेटिंग? सो वी आर गेटिंग 2x इंटू dx by dt. dx by dt is what? We know that rate of change of position is nothing but or rate of change of displacement is nothing but your velocity. So 2x into v equal to 2at. So 2 got cancelled. So x into v equal to a into t. So we are getting this as equation 1. So this is our equation number 1. Next, after that what we'll do? We'll try to find out the acceleration. Okay, so here in this particular case just remember that this a here is a constant, here this a is a constant. Clear? So we'll try to write the acceleration in some other terms. Clear? So we'll differentiating once again.
So differentiating again with respect to time. तो दोबारा अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना होगा? So here in this particular case it will be using the UV formula. So UV formula में इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना होगा? U इंटू डी वी बाई डी टी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे इंटू डी वी बाई डी टी प्लस वी इंटू डी यू बाई डी टी. क्लियर? यूवी फॉर्मूला में हम इसको अप्लाई करेंगे तो फाइनली व्हाट विल बी द इक्वेशन. लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम यूवी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो कितना होगा? सो एक्स इंटू डी वी बाई डी टी प्लस वी इंटू डी एक्स बाई डी टी and that will be equal to, here a is constant. Clear? Remember that here a is constant, a into dt by dt, so it will be 1. So it will be what? 1. So finally here what we are getting, so we are getting x into dv by dt plus v into dx by dt is what? Dx by dt is v equal to a. So that means here dv by dt, so let us consider this as acceleration. So we indicate acceleration over here. Here we will indicate acceleration. We'll just remember that acceleration is indicated by alpha. Let it be alpha. So based upon that one, so from here onwards x into dv by dt is nothing but our acceleration, so let it be alpha plus v square equal to a. A is constant, v is velocity and x is displacement. Okay, so finally here in this particular case what will be the value of acceleration? So acceleration, हमें acceleration पूछा गया है, so acceleration will be equal to a minus v square divided by x. What we are getting? X acceleration is nothing but a minus v square by x. So finally in this particular case, तो हमें यहाँ पे पूछा गया है, क्या पूछा गया है हम लोग को? यहाँ पे हमें acceleration पूछा गया है, तो उसका वैल्यू कितना होगा? क्लियर? तो अभी हम क्या करेंगे इस पर्टिकुलर के, ये तो एक इक्वेशन मिला है, ये भी एक इक्वेशन है और ये एक इक्वेशन है. क्लियर? इन दोनों इक्वेशंस को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं. सो फाइनली इट इज कमिंग आउट टू बी वी स्क्वायर. ओके, वी स्क्वायर. ओके, सो राइट नाउ व्हाट विल यूजिंग इक्वेशन 1. अच्छा, इसको आप एक इक्वेशन मान लो, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3. इक्वेशन 1 इन 3 में अगर हम इक्वेशन 1 को यूज करेंगे तो इक्वेशन 1 से क्या यूज करेंगे? वी नो दैट x इंटू वी इक्वल टू ए टी. That implies v will be equal to at upon x. So finally alpha will be equal to a minus v square will be equal to a square t square upon x square all divided by x. So here in this particular case, so if we solve this particular one, so how much we'll be getting? If we'll be solving this particular case, so alpha will be coming out to be a minus, okay, here a, or let us take the LCM here, a x square minus a square t square upon it will be x cube. So finally here it is coming out to, so finally if we'll take a common from here, it will be x square minus a t square divided by x cube. But what is x square minus a t square? What is x square minus t square? From 1, or not from 1, from the first equation, from x square equal to a t square plus b. तो इसमें x square minus a t square का वैल्यू कितना होता है? b. So finally अल्फा का वैल्यू यहाँ पे कितना आएगा? अल्फा विल बी कमिंग आउट टू बी a into b divided by x cube. That means here in this particular case finally we can say that alpha is proportional to 1 upon x cube.
alpha is proportional to 1 upon x cube. So this is, so that means what you can say here, alpha is proportional to 1 upon x cube. That means option A is the correct one. Okay, moving to question number 40 here. In this particular case, what it is saying, a car starts from rest, attains a velocity of 36 km per hour with an acceleration of 0.2 meter per second square, travels 9 km with this uniform velocity, and then comes to halt with a uniform deceleration of 0.1 meter per second square. The total time of travel of the car is, okay, here in this particular case, if we just see it, the motion is divided into three different parts. In the first part, it is undergoing acceleration of 0.2 meter per second square, and after that, in the next part of the motion, it travels 9 km with uniform velocity. That means next part of the motion, second part of the motion, it undergoes motion with uniform velocity, and after that it undergoes again deceleration, which is retardation. So finally it is asking what is the total time during the whole journey. So if we just draw the figure, and let it starts motion from A, and then it moves up to B, and then it moves up to C in the second part of motion, and in the third part of motion it moves from C to D. Okay, in the first part of motion, here what it is saying, starts from rest. If it starts from rest, then its initial velocity u is 0, and after that it attains a velocity of 36 km per hour. That means when it reaches at point B, जब ये B point पर पहुंचेगा तो उसका velocity कितना हो जाएगा, 36 km per hour. And during that motion from A to B, its acceleration is how much? Its acceleration is 0.2 meter per second square. And in the second part of motion, it moves from B to C, and travels a distance of how much? It travels a distance of 9 km. 9 km with uniform velocity. That means velocity remains constant. That remains constant over here also till C. Its velocity remains constant, and it remains 36 km per hour. Okay. Then while moving, then in the third part of motion, it comes to halt with a uniform deceleration. Comes to halt means its final velocity over here, it becomes 0. Final velocity over here, it becomes 0. And here acceleration is how much? Here acceleration is negative 0.1 meter per second square. Then what it is asking? It is asking the total time of travel. So we'll divide it into three different sections. That means motion. First part of motion from A to B. Motion from A to B. So here in this particular case, initial velocity is how much? Initial velocity is 0, and final velocity initial velocity be 0, and final velocity be how much? 36 km per hour. Clear? And here we have indicated B and B, so here 0, and here 36. Not it is not that. This is the final velocity from C to D when the motion takes place from C to D. So let it be some other terms. Let it be some B prime. Let it be. Okay, and here during this motion from A to B, the acceleration is 0.2 meter per second square. So everything is in SI units. That means we have to convert this velocity. So 36 into 5 upon 18. So 18 to the 36. So 10 meter per second. Okay, so acceleration over here is 0.2 meter per second square. Then it is asking about the time. So so we'll use uniform equation for uniform velocity motion. Then what is the equation? V equal to U plus AT. So V is 10 equal to U is 0 plus acceleration is 0.2 into T. So there what we'll be getting? We'll be getting T is equal to 10 upon 0.2, that is 50 second. Clear? Let it be T1. Let it be T1. So over here let it be T1. Okay, over here let it be T1. So T1
t1 is coming out to be 50 second. Okay, this is first. Next, motion from, then after that motion from B to C. So while moving from B to C, there in this particular case the velocity remains constant, that is 36 kilometer per hour, which is nothing but 10 meter per second, and displacement is 9 kilometer, that means 9,000 meter. Then time, what is the time? So we'll use the equation for information. And what is the equation? It is velocity equal to displacement upon time. So that implies time will be equal to how much? Displacement upon velocity. So t equal to displacement is 9,000 divided by velocity is 10. So it will be 900 second. So this, let it be t2. So tt is coming out to be 900 second. And then after that motion from C to D. So here in this particular case, initial velocity is how much? Initial velocity is 36 kilometer per hour, which is nothing but 10 meter per second. And final velocity is 0 because it is coming to halt, that means coming to rest. And acceleration is how much? Minus 0.1 meter per second square. Then what will be the time? So in order to find out the time, once again we'll use the equation for uniformly stationary motion, that is v equal to u plus at. So final velocity is 0 over here, initial velocity is 10 plus acceleration is negative 0.1 into time t. Clear? So if it is the case, then the value of t will be equal to 10 upon 0.1. so it will be coming out to be 100 seconds. So t3 is 100 seconds. Okay, so finally right now what we'll do, we'll calculate the total time. So total time for the whole journey will be t equal to t1 plus t2 plus t3. So t1 is coming out to be 50 plus t2 is coming out to be 900 plus t3 is coming out to be 100. So 1050 seconds. So total time कितना हमें लग रहा है? टोटल टाइम लग रहा है 1050 सेकेंड. सो हियर इन दिस पर्टिकुलर केस विल चेक कहाँ पे 1050 सेकेंड आ रहा है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट. Okay, next moving to question number 41. Okay, here in this question what it's saying, a particle moving with uniform acceleration has an average velocities v1 v2 v3 over the successive intervals of time t1 t2 t3 respectively. Okay, तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है, यहाँ पे भी वही मोशन को तीनों पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है. सो पहला पार्ट में यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी v1 जिसमें टाइम इंटरवल t1 रह रहा है, दूसरा पार्ट में एवरेज वेलोसिटी v2 और जिसमें टाइम इंटरवल t2, एंड तीसरा पार्ट में एवरेज वेलोसिटी v3 और टाइम इंटरवल t3. क्लियर? और थ्रू आउट द मोशन acceleration remains constant. So we'll draw the figure once again. Here in this particular case, object moves from A to B, then B to C, then C to D. Three parts. Okay, so here in this particular case, what it is saying is that throughout the motion the acceleration will remain constant. यहाँ पे A पूरा का पूरा मोशन में ये कांस्टेंट रहेगा. क्लियर? but what it is saying is that the average velocity is v1 while moving from A to B and during that time interval is t1. जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे A से B तक मूव करेगा तो वेलोसिटी उसका v1 रहेगा और टाइम इंटरवल कितना रहेगा? t1. जब वही पार्टिकल या फिर ऑब्जेक्ट B से C तक मूव करेगा तो उसका एवरेज वेलोसिटी कितना होगा? v2 और टाइम इंटरवल उस दौरान कितना होगा? t2. एंड वही पार्टिकल जब C से D तक मूव करेगा तो टाइम इंटरवल रहेगा t3 और उसी दौरान उसका एवरेज वेलोसिटी होगा v3. क्लियर? इतना ही हमें इंफॉर्मेशन दिया गया.
और उसमें बोला गया कि ये टर्म का वैल्यू कितना आएगा। ओके, सो हियर इन दिस पर्टिकुलर केस, सो व्हाट विल बी डूइंग, हमें कुछ नया टर्म्स यहाँ पे, टर्म्स मतलब नया कुछ टर्म्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो पहला जो केस है, हम यहाँ पे पहले एज्यूम कर लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी एट ए बी यू, यू पे जो वेलोसिटी है, जो मोशन शुरू हो रहा है, तो वो जीरो भी हो सकता है, हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं यू। और जब वो बी तक पहुँच जाएगा तो उसका वेलोसिटी रिलेटेड भी वी प्राइम, जब सी तक पहुँच जाएगा तो उसका वेलोसिटी वी डबल प्राइम, एंड जब डी तक पहुँच जाएगा तो उसका वेलोसिटी हो जाएगा वी ट्रिपल प्राइम। क्लियर? ये तीनों पार्ट्स, तीनों ये जो वेलोसिटीज़ को हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए हैं। क्लियर? एंड विल ट्राई टू फाइंड आउट दैट दोज वैल्यूज। ओके, सो मोशन, सो यहाँ पे हम कुछ टर्म्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे। तो पहला वाला जो है मोशन, इसको हम ले जाएंगे इसे मोशन, मोशन फ्रॉम ए टू बी। तो यहाँ पे जो मोशन हो रहा है उसमें क्या होगा? क्लियर? हाँ, तो इस वाले पर्टिकुलर केस में मोशन फ्रॉम ए टू बी, तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी कितना है? इनिशियल वेलोसिटी, हम कुछ टर्म्स को यहाँ पे लिख लेंगे पहले। मोशन फ्रॉम ए टू बी, देन मोशन फ्रॉम बी टू सी, एंड आफ्टर दैट मोशन फ्रॉम सी टू डी। क्लियर? ओके, सो ये तीनों में इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा? तो इनिशियल वेलोसिटी ए, जब ए से बी तक जाएगा तो उस समय इनिशियल वेलोसिटी कितना है? इनिशियल वेलोसिटी हम लोग यू ही लिए हैं। एंड फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितना लिखा गया है? वी प्राइम। देन एक्सीलरेशन, acceleration is how much? Acceleration will be acceleration, acceleration कितना है यहाँ पे? a। एंड एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कितना यहाँ पे है? v1। एंड टाइम इंटरवल कितना है? टाइम इंटरवल है यहाँ पे t1। सिमिलरली इनिशियल व्हाइल मूविंग फ्रॉम बी टू सी, बी टू सी जब जाएगा तो इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा? वी प्राइम। फाइनल वेलोसिटी वी डबल प्राइम, सी पहुंच जाएगा तो वी डबल प्राइम आ रहा है। एंड एक्सेलरेशन वही सेम। एंड एवरेज वेलोसिटी कितना है? वी टू। एंड टाइम इंटरवल टी टू। मोशन फ्रॉम सी टू डी, सी से जी तक जब जाएगा तो इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा? इनिशियल वेलोसिटी विल बी वी डबल प्राइम, फाइनल वेलोसिटी विल बी वी ट्रिपल प्राइम, एक्सेलरेशन ए, एंड एवरेज वेलोसिटी इज वी थ्री, एंड टाइम इंटरवल इज टी थ्री। Clear? So based upon this cases, what we'll be doing, we'll be using the equations of uniformly accelerated motions, and we'll try to find out the final velocities over here. Okay, so if we use the equations for uniformly accelerated motion, which is nothing but v equal to u plus at, तो उसको अगर हम यूज करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे कितना होगा? तो इसको हम थोड़ा बहुत सेक्शन वाइज डिवाइड कर लेते हैं। तो पहले ये फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी कितना होगा? वी प्राइम इक्वल टू यू प्लस ए टी1 टाइम इंटरवल, टी1 टाइम इंटरवल पे एक्सेलरेशन हो रहा है जिसकी वजह से ए से वेलोसिटी जो उसका है यू से वी प्राइम तक चेंज हो रहा है। तो वी प्राइम इक्वल टू यू प्लस ए टी1। क्लियर? And in the second case, motion from B to C, तो final velocity V double prime will be equal to V prime plus A, time interval is T2, but V prime यहाँ पे ये वाला पार्ट है U plus A T1, this is U plus A T1 plus A T2। तो V double prime का वैल्यू कितना आ रहा है? V double prime का वैल्यू आ रहा है U plus A into T1 plus T2। सिमिलरली वी ट्रिपल प्राइम, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे वी ट्रिपल प्राइम, इसका वैल्यू कितना आएगा? वी ट्रिपल प्राइम विल बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ओवर हियर वी डबल प्राइम प्लस ए टी थ्री, टाइम इंटरवल टी थ्री है। सो फाइनली वी डबल प्राइम का वैल्यू कितना आया? वी डबल प्राइम का वैल्यू आया यू प्लस ए टी वन प्लस टी टू प्लस ए टी थ्री।
ये वाला टर्म। सो u प्लस a इंटू t1 प्लस t2 प्लस t3, clear? So that is b triple prime. Okay, finally, so we got all these particular terms, clear? Right now what we will do, we'll use the equation for average velocity in uniformly accelerated motion. Okay, so note point, what is the note point over here? We'll try to find out equation for average velocity in uniformly accelerated motion, in uniformly accelerated motion, and it is graphically हम इसको निकालेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विल टेक ए वी टी कर्व एंड यहाँ पे यूनिफॉर्मली स्ट्रेट मोशन हो रहा है तो स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा हमें। एंड अगर हमें स्ट्रेट लाइन मिल रहा है तो इस वाले पर्टिकुलर केस में एज्यूम दैट लाइन कट्स द वेलोसिटी एक्सिस एट v1 एंड फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे कितना होगा, फाइनल वेलोसिटी हम एज्यूम कर लेते हैं v2, क्लियर? सो एंड टाइम यहाँ पे कितना है, लेट इट बी t, क्लियर? देन व्हाट विल बी द एरिया अंडर दिस पर्टिकुलर कर्व, एरिया अंडर यहाँ पे क्या देगा, वी नो दैट एरिया अंडर vt curve gives what, that gives displacement, that gives displacement. So finally displacement, let it be x. So displacement which is not x, let it be area. So area पहले निकालेंगे, तो एरिया कितना होगा, एरिया इस कर्व के अंडर में, तो इसको हम क्या करेंगे, दो पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, क्लियर? ये ट्राइंगल हुआ और ये एक रेक्टेंगल हुआ। तो फिर इसमें ये जो रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, तो रेक्टेंगल का एरिया ये लेंथ एंड इनटू दिस साइड, ये साइड और ये साइड का अब मल्टीप्लिकेशन, दैट मीन्स v1, इसको अगर जीरो लेंगे तो ये लेंथ कितना हो जाएगा v1, और ये लेंथ कितना होगा t, ये हो गया हमारा t, और ये लेंथ हो जाएगा हमारा v1, और ये पर्टिकुलर लेंथ हमें कितना मिलेगा, v2 माइनस v1, और ये तो हमारा t रहा, तो v1 इंटू टी प्लस एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल। ये जो ट्राइंगल का है, ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस कितना है यहाँ पे, मान लो कि t है, एंड हाइट कितना हम लेंगे, तो फिर v2 माइनस v1, क्लियर? तो फाइनली ये कितना मिलेगा हमें, v1 इंटू टी प्लस हाफ v2 इंटू टी माइनस हाफ v1 इंटू टी। So finally this will be coming out to be half of v1 plus v2 into t, clear? So area हमें इतना मिल रहा है, but this area is nothing but our displacement x, clear? So that means displacement divided by time is nothing but half into v1 plus v2, but displacement, we know that displacement divided by time interval, that is nothing but average velocity, v average. तो दैट मीन्स v एवरेज यहाँ पे हमें कितना मिला, सिंपली v1 प्लस v2 बाय 2। तो ये वाला टर्म को आपको यहाँ पे याद रखना है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मान लो कि कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी आपको मालूम है और वो भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा हो, तो एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, सिंपली v1 प्लस v2 बाई 2, क्लियर? तो अगर ये वाला पर्टिकुलर केस है तो इसमें हम इसमें जो इक्वेशन हम यूज करेंगे इस वाले पर्टिकुलर केस में, लेट मी कॉपी दिस फिगर, 1 सेकेंड, हम तो कॉपी कर लेते हैं। तो ये वाला पार्ट, इसमें ये वाला पर्टिकुलर केस में
So here in this particular case, ओके तो इसमें क्या होगा, अभी हम एवरेज वेलोसिटीज को लिखने की कोशिश करेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी, तो यहाँ पे ये वाला जो केस हमें मिला, तो ट्वाइस ऑफ वी एवरेज विल बी नथिंग बट इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। ये कितना हो रहा है, ये ग्राफ को अगर आप देखोगे तो ये तो कर्व आपका v1 से शुरू हो रहा है और फाइनल वेलोसिटी v2 तक जा रहा है। क्लियर। तो एवरेज वेलोसिटी कितना आएगा, एवरेज ट्वाइस ऑफ एवरेज वेलोसिटी विल इक्वल टू v1 प्लस v2। क्लियर। अच्छा, तो अगर ये वाला पर्टिकुलर केस है, देन ये इन दिस पर्टिकुलर ये वाला जो कर्व है, तो एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे ये बताया गया है कि v1 है जब मोशन हो रहा है, तो u से v प्राइम तक। तो इसमें जो पार्ट है, सो मोशन फ्रॉम ए टू बी, फिर से दोबारा हमें उसको देखना पड़ेगा। तो मोशन 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 और डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, दैट विल मेक द लेक्चर लेंथी। सो फ्रॉम ए टू बी, मोशन फ्रॉम ए टू बी, जब मोशन फ्रॉम ए टू बी हम लेंगे तो एवरेज वेलोसिटी कितना बताया गया है, v1। सो v1 विल बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितना है u, और फाइनल वेलोसिटी कितना है v प्राइम। क्लियर। तो u प्लस v प्राइम डिवाइडेड बाय u प्लस v प्राइम, u प्लस v प्राइम डिवाइडेड बाय 2। दैट मीन्स हियर व्हाट विल गेट, twice of v1 will be equal to u plus v prime। so u वैसा रहेगा एंड v प्राइम हमें कितना मिला अभी, v प्राइम हमें मिला यहाँ पे कितना, u प्लस 81। v प्राइम कितना मिला, u प्लस 81, u प्लस 81। क्लियर। so that value will be coming out to be 2v1 equal to 2u plus 81। ये 2v1 का वैल्यू हमें मिला। क्लियर। एंड सिमिलरली मोशन फ्रॉम बी टू सी तक अगर हम देखेंगे, तो इस वाले पर्टिकुलर केस में जो एवरेज वेलोसिटी कितना है, v2 विल बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इज v प्राइम एंड फाइनल वेलोसिटी इज v डबल प्राइम डिवाइडेड बाय 2। तो उसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं 2v2 विल बी इक्वल टू v प्राइम प्लस v डबल प्राइम। क्लियर। सो 2v2 विल बी इक्वल टू, तो v प्राइम कितना है, v प्राइम अभी हम लोग लिए u प्लस 81, v प्राइम कितना है, तो मैं इसको थोड़ा बहुत दोबारा यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ। v प्राइम का वैल्यू है इतना, v prime is this particular term, this is v prime and v डबल प्राइम एंड v ट्रिपल प्राइम का वैल्यू यस आ रहा है। ये है। क्लियर। तो इसको थोड़ा बहुत हम ब्रैकेट के अंदर में रख दे रहे हैं। Okay, so here in this particular case, so v prime is u plus 81, and v double prime is how much, u plus a into t1 plus t2, u plus a into t1 plus t2। so finally 2u plus a into, ओके यहाँ पे ए टी वन है, 2a t1 है और यहाँ पे भी a t1 होगा, तो 2a t1 प्लस प्लस यहाँ पे ये कितना मिलेगा, a t2। क्लियर। एंड सिमिलरली मोशन फ्रॉम सी टू डी, अगर सी से डी तक का हम देखेंगे तो एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे कितना है, v3। एवरेज वेलोसिटी हियर इज v3। क्लियर। सो v3 विल बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी v डबल प्राइम प्लस v ट्रिपल प्राइम डिवाइडेड बाय 2। सो v डबल प्राइम प्लस v ट्रिपल प्राइम डिवाइडेड बाय 2। तो दैट मीन्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2v3 विल बी इक्वल टू v डबल प्राइम प्लस v ट्रिपल प्राइम। सो 2v3 का वैल्यू कितना होगा, तो v डबल प्राइम का वैल्यू यहाँ पे है
u प्लस ए इंटू टी वन प्लस टी टू, u प्लस ए इंटू टी वन प्लस टी टू प्लस भी ट्रिपल प्राइम का वैल्यू कितना है, u प्लस ए इंटू टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री. सो u प्लस ए इंटू टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री. क्लियर. सो फाइनली ये कितना मिलेगा, 2u प्लस 2a टी वन प्लस 2a टी टू प्लस a टी थ्री. सो 2v3 का वैल्यू हमें इतना मिला. क्लियर. अगर ये 2v3 का वैल्यू हमें मिला, ये 2v2 का वैल्यू हमें मिला, तो फाइनली इस वाले पर्टिकुलर केस में हम अभी जो कैलकुलेशन करने के लिए बोला गया है कि इसका वैल्यू निकालो v1 माइनस v2 डिवाइडेड बाई v2 माइनस v3, इसका वैल्यू कितना होगा. क्लियर. v1 माइनस v2 डिवाइडेड बाई v2 माइनस v3. ओके. सो v1 माइनस v2, सो v1 माइनस v2 अगर हम यहाँ पे निकालेंगे. क्लियर. सो v1 माइनस v2 का वैल्यू कितना आएगा, तो इसमें हम लोग थोड़ा बहुत इसको एक पेज ले जाते हैं. तो व्हाट विल डू, विल टेक ए पेज, इंसर्ट ए पेज, न्यू पेज आफ्टर. क्लियर. तो इस वाले पर्टिकुलर केस में यहाँ पे ये जो पेज है इसको अगर हम लेंगे, हाँ, तो इसमें हमें निकालना है क्या है, इसमें हमें निकालना है v1 माइनस v2 डिवाइडेड बाई v2 माइनस v3. सो व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट, v1 माइनस v2 डिवाइडेड बाई v2 माइनस v3. क्लियर. तो इसको हम लोग अभी थोड़ा बहुत ले लेंगे, ये वाला पार्ट को, इस पार्ट को अगर हम लोग थोड़ा बहुत, नॉट दिस पर्टिकुलर टर्म, हमें निकालना इसको है. Okay, so here we'll paste it. Okay, so if we'll try to find out, then here in this particular case v1 minus v2 divided by v2 minus v3. So what will be the value of that one? So let 2v1 minus 2v2, 2v1 minus 2v2 का वैल्यू कितना होगा. So it will be 2u plus a t1 माइनस 2v2 का वैल्यू कितना होगा, 2u माइनस 2a t1 माइनस a t2. Clear. So here in this particular case 2u will get cancelled out, and at1 minus 2at1 will be how much, it will be minus at1 minus at2. So it is nothing but minus a into t1 plus t2. Clear. So if that is 2v1 minus 2v2, that means here v1 minus v2 will be equal to minus a by 2 into t1 plus t2. Clear. Okay, that is one case. And similarly if we try to find out the second term, that is v2 minus v3, तो उसके लिए हमें क्या करना है, 2v2 minus 2v3. तो 2v2 minus 2v3 कितना होगा. So 2v2 is this one. So 2u plus 2at1 plus at2 minus 2u plus 2at1 plus 2at2 plus at3. ओके. तो नेगेटिव साइन हमें यहाँ पे अंदर में लेना है. तो नेगेटिव साइन को अगर हम अंदर में लेंगे तो कितना होगा, सो इट विल बी 2u प्लस 2at1 प्लस at2 माइनस 2u माइनस 2at1 माइनस 2at2 माइनस at3. सो 2u 2u get cancelled out. So finally how much we are getting here, it is at2 minus 2at1, so minus at2 minus at3. So we'll be getting how much, so we'll be getting minus of at2 plus t3. so हमें कितना मिला, माइनस ऑफ at2 प्लस t3. और ये किसका वैल्यू है, ये 2v2 माइनस 2v3 का. तो v2 माइनस v3 का वैल्यू कितना मिलेगा, सो माइनस ऑफ a बाई 2 t2 प्लस t3 ये मिला. v1 माइनस v2 का वैल्यू इतना मिला, v2 बाई v3 का वैल्यू, तो v1 माइनस v2 होल डिवाइडेड बाई v2 माइनस v3 का वैल्यू कितना मिलेगा,
minus of a by 2 into t1 plus t2 whole divided by minus of a by 2 into t2 plus t3. So these two get cancelled. So finally how much we are getting? So t1 plus t2 divided by t2 plus t3. So this will be the final answer. So we'll check the correct option. Correct option is t1 plus t2 by t2 plus t3. So option D. Option D, that will be the correct one, not this B. So this is option D. Clear? So this is the case. So that becomes little bit lengthy. Okay, moving to question number 42 here. A particle starts from point A, moves along a straight line path with an acceleration given by given by A equal to P minus QX. Yes, P minus QX, where P, Q are constant, P and Q are constants, and X is distance from point A. X is the distance from point A. Okay, from starts from A, moves on a straight line. Okay, fine. The particle stops at point B. Simple case, but it's saying starts from A and stops at B. Clear? And during this motion, acceleration is P minus QX, and the distance is nothing but distance traveled, that is X. And PQ are constant, and X is distance from A. Okay, X is the distance from A. X is taken as the distance from A. It not here. It has not been said that it is from A to B. Okay. The particle stops at point B. The maximum velocity of the particle is, what is it asking? It is asking the maximum velocity. What will the maximum velocity? Velocity will be maximum. Velocity is maximum. वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगा? हमें मालूम है उसका कंडीशन है डी वी बाई डी टी शुड बी जीरो. क्लियर? दैट मीन्स in that particular case dv by dt is nothing but acceleration, so acceleration should be zero. तो velocity maximum कब होगा? जब acceleration zero होगा. So acceleration a zero that implies p minus qx should be zero. That implies p equal to qx. That implies x equal to p by q. तो वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगा? जब डिस्टेंस कितना कवर किया होगा? जब डिस्टेंस कवर क्या होगा? p बाई क्यू. क्लियर? एंड p q आर कॉन्स्टेंट्स. ओके, तो ये जो वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, क्लियर, ये वाला पोजीशन पे तो मैक्सिमम होगा, ये हमें मालूम हो गया. बट व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी? द क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज. तो वेलोसिटी हमें निकालना है. हमें एक्सेलरेशन यहाँ पे दिया गया है और हमें वेलोसिटी निकालना है. एंड एक्सेलरेशन हियर इन दिस पर्टिकुलर केस ए इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, एंड वी वांट टू फाइंड आउट द वेलोसिटी. क्लियर? सो वी फंक्शन ऑफ एक्स. तो ए फंक्शन ऑफ एक्स अगर है और उससे हमें वेलोसिटी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो ए is nothing but dv by dt, and we know that v equal to dx by dt, so that implies dt equal to dx upon v. तो ये वैल्यू को अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो कितना मिलेगा? a इक्वल टू डी वी बाई डी टी का वैल्यू कितना है? डी एक्स अपॉन वी. तो इट विल बी v डी वी अपॉन डी एक्स. तो finally what you can do over here? So a equal to p minus qx. A can be written as v dv by dx equal to p minus qx. So v dv, taking velocity terms one side and x terms other sides, so p minus qx into dx. Right now integrating both sides. दोनों साइड को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? सो इंटीग्रेशन ऑफ वी डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी माइनस क्यू एक्स डी एक्स. क्लियर? सो वी का इंटीग्रेशन कितना होगा? वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, एंड दैट शुड बी इक्वल टू पी डी इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स
minus integration of q dx. Okay, qx dx, clear. So it will be, so finally v square upon 2 will be equal to px minus q into x square by 2, clear. So ये वैल्यू हम लोग को मिल रहा है यहाँ पे. So finally here in this particular case, if we keep v square term on one side, so v square will be equal to 2px minus q x square, clear. So but initially putting the condition a equal to 0, we got the value of x. X का value हमें कितना मिला है? X का value हमें मिला है p upon q. So put this value over here. So v square equal to 2p, x का value कितना है? p upon q minus q into x square. X square आपका value कितना है? p upon q का whole square. So how much we'll be getting? We'll be getting this value to be 2p square upon q minus q into p square upon q square. So q, एक q यहाँ पे कट जाएगा. So 2p square upon q minus p square upon q. तो वैल्यू कितना आ रहा है? Value is coming out to be p square upon q, clear. So finally what we are getting, v square is equal to p square upon q. तो v का वैल्यू कितना होगा? p upon root q. So this is the final answer. Okay, so we'll check p upon root q. p upon root q कहाँ पे आ रहा है? p upon root q, ये p upon root q. So option B is the correct. Okay, in question number 43, a one-dimensional motion is described by x equal to t minus sin t. Then which one of the following is correct? Okay, x is given, x is equal to t minus sin t. Okay, so first में यहाँ पे ये बोला गया है कि x at any particular value of t is always greater than 0, and second में v is greater than 0 for all values of t, and a is greater than 0 always for all values of t, clear. तो x greater than 0 for all values of t, इसको हम पहले चेक कर लेते हैं. अच्छा, x वेलोसिटी यहाँ पे पोजीशन दिया है, वेलोसिटी दिया है, तो वेलोसिटी कितना होगा? v equal to dx by dt. So it will be d by dt of t minus sin t. So that value will comes out to be t माइनस साइन टी का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा? साइन टी डिफ्रेंशिएशन विल बी, अच्छा, इट विल बी डी टी बाई डी टी माइनस डी बाई डी टी ऑफ साइन टी, क्लियर. सो डी टी बाई डी टी इज 1 माइनस साइन टी का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा? कोस टी. So velocity is coming out to be 1 minus cos t, and similarly what will the value of acceleration? Acceleration is nothing but dv by dt. So d by dt of velocity is 1 minus cos t. So it will be d by dt of constant minus d by dt of cos t. So how much will be? It will be 0 minus cos t का differentiation minus sin t. So finally it will be sin t. So acceleration कितना मिल रहा है हमें? sin t. Okay. तो इसमें अभी हम कंडीशंस चेक करेंगे कि कोई भी वैल्यू टी का वैल्यू जो हम लेंगे 0 से ज़्यादा होगा तो x का वैल्यू पोजीशन जो है वो 0 से ज़्यादा होगा. अगर हम मान लो कि यहाँ पे इफ़ t इक्वल टू 0, देन x कितना होगा? 0 माइनस साइन 0. अब मान लो कि 0 को रेडियन पे ही ले रहे हैं तो ये साइन 0 का वैल्यू कितना होगा? 0 होगा. तो ऑब्वियसली दिस टर्म विल बिकम 0. बट इफ़ वी टेक एनी वैल्यूज ऑफ टी, मान लो कि हम ले रहे हैं, अब साइन का वैल्यू 0 के बाद नेक्स्ट 0 कब होगा? पाई पर ही 0 होगा, क्लियर. तो उसके अंदर में और कहीं पे 0 नहीं होगा साइन का, क्लियर. सो तो इस वाले पर्टिकुलर केस में अगर मान लो कि इफ़ टी इक्वल टू पाई, अगर मान लो कि पाई ले रहे हैं तो एक्स का वैल्यू कितना होगा? तो इट विल बी पाई माइनस साइन पाई. तो साइन पाई का वैल्यू 0 है, तो ऑब्वियसली इट इज कमिंग आउट टू बी पाई.
और उसके बाद अगर फिर उसके बाद पाई टू 2 पाई के अंदर में साइन का वैल्यू तो ज़ीरो नहीं है, तो उस वाले पर्टिकुलर केस में उस वाले पर्टिकुलर केस में 2 पाई में भी आपको एक्स का वैल्यू 2 पाई ही मिलेगा, साइन 2 पाई विल बी जीरो। सो फाइनली हियर इन दिस पर्टिकुलर दिस विल बी करेक्ट। दैट मीन्स कोई भी टी का वैल्यू हम कोई भी कुछ भी लेंगे जो कि जीरो से ज़्यादा हो, तो उस केस में एक्स का वैल्यू जीरो होगा। ओके, दैट इज करेक्ट। So that means this option is coming out to be correct. Next, B. Moving to this one, so velocity for any value of t will be greater than 0 if t is greater than 0. तो t का वैल्यू हम मान लो कि यहाँ पे लेते हैं, क्या लेंगे अब मान लो कि वही वैसा कंडीशन, 2-3 कंडीशन लेंगे। इफ़ t इक्वल टू 0 देन v कितना आ रहा है, 1 माइनस कोस 0। कोस 0 का वैल्यू 1 है, कोस 0 का वैल्यू कितना है, 1। ओके, तो 1 माइनस 1 इट इज़ 0। क्लियर। बट here in this particular case if we will take t to be greater than 1, okay, t to be greater than 0, then what value we can take? Suppose if we will take if t इक्वल टू पाई, अगर मान लो कि हम पाई लेंगे, अब पाई बाई 2 लेंगे तो कोस पाई बाई 2 विल बी 0, तो यहाँ पे भी ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 ही मिलेगा। बट टी का वैल्यू अगर हम पाई लेंगे, क्लियर, तो पाई लेंगे तो कितना होगा, v विल बी इक्वल टू 1 माइनस कोस पाई, और कोस पाई का वैल्यू कितना है, कोस पाई का वैल्यू -1 है। क्लियर, तो कोस पाई का वैल्यू कितना होगा, -1 होगा। सो 1 माइनस 1, 1 माइनस ऑफ -1 दैट इज़ 1 + 1 2 आ रहा है, ये भी पॉजिटिव है। इफ़ टी इक्वल टू, अगर हम मान लो कि कौन सा वैल्यू लेंगे, टी का वैल्यू अब मान लो कि हम यहाँ पे लेंगे कोई दूसरा केस हम ले सकते हैं क्या, दूसरा केस अब 2 पाई पे भी कितना आ रहा है, 2 पाई पे वही 0 आ रहा है। क्लियर, और यहाँ पे अगर हम लेंगे कोस माइनस पाई, क्लियर, टी का वैल्यू 0 से ज़्यादा होगा। अच्छा ठीक है, तो कोस माइनस पाई तो नहीं होगा, अगर हम लेंगे 3 पाई भी वही -1, देन इन दिस पर्टिकुलर केस, तो इसमें अगर हम मान लो कि टी का वैल्यू यहाँ पे लेंगे 2 पाई, अगर हम 2 पाई लेंगे देन इन दैट पर्टिकुलर केस द वैल्यू ऑफ v विल बी इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 पाई। सो 1 माइनस कोस 2 पाई का वैल्यू कितना है, 1। क्लियर, सो इट विल बी 0। क्लियर, दैट मीन्स t इज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 and v is equal to 0, so that means this option will not be correct. And moving to acceleration part, third option, what the third option is saying is that acceleration will be greater than 0 for all values of t which are greater than 0. So t, if we take if t equal to 0, that implies a equal to 0. clear, sin 0 का वैल्यू 0 होता है, sin पाई बाई 2 का वैल्यू 90, and then sin, if we will take t is equal to pi, that implies a equal to साइन पाई, और साइन पाई का वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। दैट मीन्स इट इज़ नॉट पॉसिबल, टी यहाँ पे 0 है बट एक्सेलरेशन इज नॉट ग्रेटर देन 0, so that means for all values of t in which are greater than 0, b and c options are not correct, b and c are not correct, so all of these ये तो नहीं होगा। so finally we can say option a is the correct one. okay, option a is the correct one. Next, here in this particular case, the question, it's a graphical type of question. what it is saying is that position time graph for motion with zero acceleration, position time graph for motion with zero acceleration. okay, zero acceleration 0, that implies dv by dt equal to 0, dv by dt equal to 0, and when it is 0, that implies v must be constant. क्लियर, अगर v कांस्टेंट हुआ तो उस समय पोजीशन टाइम ग्राफ में वेलोसिटी कांस्टेंट, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इफ इट इज पोजीशन व्हिच इज in meter and time in second, then velocity constant will be a straight line. clear, either passing through the origin or maybe passing through somewhere else, it will be a straight line. clear,
and that will be inclined to the time axis. So where this kind of graph you will get here. So this is not, not, and option C is the correct one. Option D here, it is not possible. Why? Because and this graph is not valid. Why? Because at this particular position, at this particular instant of time, at this particular time, it is showing two different locations. और ये पॉसिबल नहीं है, दो लोकेशन यहाँ पे शो कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ ये भी लोकेशन शो कर रहा है, मतलब टी टाइम पर वो x1 पे भी होगा और x2 पे भी होगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। क्लियर। और यहाँ पे ये पहला वाला जो केस है, इसमें क्या हो रहा है, इन दिस पर्टिकुलर केस वेलोसिटी नेगेटिव आ रहा है, और फिर यहाँ पे जीरो आ रहा है, और फिर यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, और यहाँ पे वेलोसिटी पहले पॉजिटिव आ रहा है, फिर जीरो, फिर नेगेटिव, ऐसे आ रहा है। क्लियर। सो यहाँ इन दोनों केस में आपका एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा और ये ग्राफ वैलिड नहीं है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। Okay, so in question number 45, what it's saying, the velocity displacement graph of a particle is shown in figure. This is the velocity displacement graph. Which of the following graphs correctly represent the variation of acceleration with displacement? So Vx graph is given. We have to find out the Ax graph, acceleration as a function of displacement graph. Okay, fine. So how can we get, so acceleration, we know that if v is a function of x and we want to find a, then the formula is a is equal to v dv by dx. But what is the equation for v? So in order to find out the equation for v, we'll take the equation for straight line. Why? Because this is a straight line. Clear. So here in this particular case, this particular intercept on the y axis, ये जो लाइन है यहाँ पे y axis पे जहाँ पे कट कर रहा है वो कितना है, that is 0, v0, and the line which cuts on the x axis पे जहाँ पे कट कर रहा है, that is x0, 0. Clear. So that means we are having two endpoints of a line, then we can I think we can get the equation of straight line. And what is the equation of straight line? That is y minus y, we can say y minus y1 equal to slope of the line. Slope of the line is y2 minus y1 divided by x2 minus x1 into x minus x1. Clear. So this is the equation of this line. But here y along y axis is taken as the velocity and x axis is taken as the displacement. That means that the corresponding equation will be equal to v minus v1 equal to v2 minus v1 divided by x2 minus x1 whole into x minus x1. But here in this particular case, this line as motion starts, initially the particle is located at v0, and at x0 it is initially at when it is at origin, the initial velocity is v0, and when it is at x0 the velocity is 0. So this is the initial one, so that will be simply indicated as that will be simply indicated that initial point will be indicated as what, that will be, let it be x1, v1. जैसे कि हम लोग कोऑर्डिनेट पॉइंट को x, y से इंडिकेट करते हैं, वैसे ही कोऑर्डिनेट पॉइंट को हम लोग यहाँ पे इंडिकेट करें, और ये क्या होगा, दैट विल बी x2, v2. Clear. So right now if we use the equation, then v minus v1 is v0 equal to v2 minus v1, v2 is 0 minus v1 is v0 divided by x2 is what, x0 minus x1 is 0 whole into x minus x1 is 0. Okay.
So finally how much we are getting? We are getting v minus v naught equal to minus v naught upon x naught into x. Okay, this is what we are getting. And here this v naught is the y intercept. This v naught is what? This v naught is the y intercept. That means finally here in this particular case, if we'll write, so v minus v naught equal to minus v naught upon x naught into x. That means v is equal to minus v naught upon x naught into x plus v naught. Clear? So this is the equation of velocity, and this velocity function of displacement. Okay, but if this is the case, then what will be the acceleration? So we know that a equal to v dv by dx, but here one thing okay, no problem, we can do it. So what we'll be doing over here, so we'll try to find out the value of dv by dx first. So if we will differentiate this one, dv by d by dx of v is minus v naught upon x naught into x plus v naught. इसको अभी हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये वैल्यू कितना आएगा? सो दैट विल बी माइनस वी नॉट अपॉन एक्स नॉट प्लस 0. इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो dx बाई dx 1 और v नॉट एक कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएट कितना होगा? 0. सो दैट मीन्स dv बाई dx का वैल्यू कितना आ रहा है? माइनस वी नॉट अपॉन x नॉट. Clear? Okay, and that is a constant. So finally what will be the value of a? The value of a will be equal to v dv by dx, and v is what? V is minus v naught upon x naught into x plus v naught whole into dv by dx. dv by dx is minus v naught upon x naught. Clear? So if we multiply these two, so what we'll be getting? We'll be getting it will be minus minus plus plus v naught square upon x naught square into x minus v naught square upon x naught. So acceleration we are getting, this is also in the form of a straight line. Clear? What we are getting? We are getting this as a form of straight line. So that means what? Here we can say, here you can say that if it is a straight line, that means this will be having what? This will be having positive slope. This straight line, that means in this particular case, this is the slope mx plus c, and the intercept on the acceleration axis, that will be coming out to be what? That will be coming out to be negative. Clear? नेगेटिव इंटरसेप्ट यहाँ पे आ रहा है. इस वाले पर्टिकुलर केस में यहाँ पे जो इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस जो कि था वो पॉजिटिव था, और यहाँ पे आपका जो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट के फॉर्मेट में यहाँ पे अगर लिखेंगे तो a प्लस वी नॉट स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट स्क्वायर इनटू एक्स. तो ये इंटरसेप्ट यहाँ पे क्या है? नेगेटिव होगा, बिकॉज जब हम इक्वेशन को लिखते कैसे लिखते हैं? y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन. क्लियर? तो इस वाले पर्टिकुलर केस में ये जो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट क्या है? नेगेटिव है. तो हमें एक ऐसा चूज करना है जहाँ पे नेगेटिव इंटरसेप्ट होगा, बट स्लोप जो है वो वहाँ पे जो मतलब जो स्ट्रेट लाइन है वो पॉजिटिव है, लॉन्ग पॉजिटिव डायरेक्शन में आना चाहिए. क्लियर? तो यहाँ पे तो ये नहीं होगा. अच्छा, इसको हम चेक करेंगे. और ये वाला केस यहाँ पे इंटरसेप्ट तो कौन सा? यहाँ पे नेगेटिव इंटरसेप्ट नहीं आ रहा है. क्लियर? सिंपली ओरिजिन से शुरू हो रहा है, और ये तो स्ट्रेट लाइन भी नहीं होगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. तो इस वाले पर्टिकुलर केस में ये होगा, ये नेगेटिव इंटरसेप्ट आ रहा है, और जो स्लोप है वो पॉजिटिव. इसका जो स्लोप है यहाँ पे ये पॉजिटिव आ रहा है. दैट मीन्स ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन. Next, in question number 46, the velocity time graph of a particle in one dimensional motion is shown in figure. This is the vt graph.
Which of the following formula is correct for describing the motion of particle over the time interval t1 to t2, t1 से t2 तक जो टाइम इंटरवल है उसमें इनमें से कौन सा इक्वेशन करेक्टली डिफाइन कर सकता है? क्लियर? ओके, वेलोसिटी ट्रायंगल, ओके डिस्क्राइब, ओके फाइन. Okay, so here in this VT graph, if we just look at the graph, this is not straight line. Clear? If it is not straight line, that means A is not constant. अगर A यहाँ पे क्या है, A यहाँ पे constant नहीं है. अगर A यहाँ पे constant नहीं है, that means this is not a uniformly accelerated motion. Clear? अगर ये uniformly accelerated motion नहीं है, तो हम uniformly accelerated motion जैसा equation को यहाँ पे use नहीं कर सकते. Clear? And second thing, टाइम इंटरवल t1 टू t2 दैट इज नॉट स्ट्रेट लाइन. अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो यहाँ पे क्या हो रहा है? क्लियर? तो इस वाले पर्टिकुलर केस में तो पहला जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन को अगर हम देखेंगे तो x एट t2 इक्वल टू x एट t1 प्लस b t इंटू t2 माइनस t1 प्लस हाफ a t2 माइनस t1 होल स्क्वायर. क्लियर? तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन कौन सा फॉर्मेट में है? यहाँ पे x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. यहाँ पे जो इक्वेशन है, जस्ट लेट मी चेक द इक्वेशन. ये वाला जो केस है इसमें आई थिंक द इक्वेशन इट्स समथिंग डिफरेंट. ओके, नो, इट इज़ करेक्ट. तो फाइनली हियर इन दिस पर्टिकुलर केस द इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ, अगर हम यहाँ पे x एट t2 माइनस x एट t1 लेंगे तो ये क्या इंडिकेट करता है? दैट इंडिकेट द डिस्प्लेसमेंट. क्लियर? सो द डिस्प्लेसमेंट s विल बी इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. इस फॉर्मेट में ये टाइम इंटरवल को इंडिकेट कर रहा है. t2 माइनस t1 इंडिकेट्स व्हाट? इट इंडिकेट्स द टाइम इंटरवल. क्लियर? तो ये आई थिंक ये t1 यहाँ पे नहीं होना चाहिए. क्लियर? ये t1 यहाँ पे नहीं होना चाहिए. सिंपली v इंटू t2 माइनस t1 यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर a t2 minus t1 whole square. Okay, fine. So that means this equation is in the form of uniformly accelerated motion and it will not possible, and it will not define this curve. Next, similarly, this if we look at this particular equation, b at t2 equal to b at t1 plus at. So b is equal to u plus at. ये format में है. Final velocity, initial velocity and acceleration in time interval. So this is in the form of v equal to u plus at. And this is also not possible because it also represents the uniformly accelerated motion. Next, average velocity. Average velocity, okay. So average velocity का जो फॉर्मूला होता है कि वो क्या फॉर्मूला होता है? क्लियर? तो एरिया अंडर द कर्व, नो नॉट एरिया अंडर कर्व. एवरेज वेलोसिटी का जो जनरल फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी भी एवरेज, जो कि हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से निकालते हैं. तो वो क्या होगा? सिंपली आपका x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1. दैट मीन्स दैट इज द डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल. बट यहाँ पे प्लस साइन लिया गया है. क्लियर? तो एवरेज वेलोसिटी का ये फॉर्मूला नहीं होगा x2 प्लस x1 इंटू टी. तो दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. क्लियर? ये भी नहीं होगा. देन एवरेज एक्सीलरेशन. एवरेज एक्सीलरेशन हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे? अच्छा, इस वाले पर्टिकुलर केस में एवरेज एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे ना? मान लो कि ये दो पॉइंट्स हम लेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को मान लो कि हम जोड़ लेते हैं. क्लियर? सो अगर इन दोनों पॉइंट्स को हम जोड़ लेते हैं तो इस लाइन का स्लोप ही हमें बताएगा यहाँ पे एवरेज वैल्यू. क्लियर? तो लाइन का स्लोप हम कैसे लेंगे? तो इस वाले पर्टिकुलर केस में यहाँ पे मान लो कि v1 है और ये यहाँ पे v2 है जब t1 t2 है. क्लियर? तो उस केस में तो ये वैल्यू कितना होगा? दिस पर्टिकुलर वैल्यू विल बी इक्वल टू v2 माइनस v1 एंड दिस पर्टिकुलर वैल्यू विल बी t2 माइनस t1. सो v2 माइनस v1 डिवाइडेड t2 माइनस t1. सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट. क्लियर? सो दिस पर्टिकुलर लाइन will be represented by the equation, this particular option D. Next, okay, here in question number 47, what is saying? Given below are four curves describing variation of velocity with time. All the curves describes variation of velocity with time of a particle. Which one of these describe the motion of a particle initially in positive direction with constant negative acceleration? Okay, constant, यहाँ पे ये वाला टर्म आपको हमेशा याद रखना है. एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या होगा? कांस्टेंट.
भले ही वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, लेकिन यहाँ पे बोला गया क्या, नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्लियर। तो कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन वाला हमें वेलोसिटी ग्राफ हमें ढूंढना है यहाँ पे। क्लियर। और वो भी यहाँ पे इनिशियली यहाँ पे बोला गया क्या, मोशन ऑफ पार्टिकल इनिशियली इन पॉजिटिव डायरेक्शन, इनिशियली पॉजिटिव डायरेक्शन में है और नेगेटिव एक्सेलरेशन वहाँ पे उसका है, और वो भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट। तो ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। क्लियर। स्ट्रेट लाइन नहीं है, कांस्टेंट होगा। बीटी ग्राफ में एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। तो बाकी 3 ग्राफ यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, तो कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन, बट यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव आ रहा है, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है और यहाँ पे भी नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ए नेगेटिव है, कांस्टेंट है, यहाँ पे भी ए नेगेटिव है, कांस्टेंट है। बट यहाँ पे हमें चेक क्या करना है कि जो मोशन है वो इनिशियली कौन सा डायरेक्शन में है, मतलब इनिशियली कौन सा डायरेक्शन में वो पार्टिकल मूव कर रहा है, पहले से ही था। क्लियर। तो पहले से पॉजिटिव डायरेक्शन में। क्लियर। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे इनिशियल मतलब जब टाइम 0 है, जब टाइम 0 है तो 0 टाइम पर यहाँ पे वेलोसिटी उसका क्या है, पॉजिटिव है, और ग्रेजुअली उसका वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रेजुअली उसका वेलोसिटी यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। क्लियर। तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव है। क्लियर। रिटार्डेशन हो रहा है। और यहाँ पे भी, यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे तो इनिशियली उसका वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, नेगेटिव वेलोसिटी है, और ग्रेजुअली उसका वेलोसिटी और भी ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है। क्लियर। तो दैट मीन्स पहले से ही वो नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन के वजह से उसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, मतलब और भी ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है। तो इनमें इनिशियल इज पॉजिटिव डायरेक्शन हमें बोल रहा है, मतलब ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, क्योंकि ये जो ऑप्शन डी यहाँ पे है इसमें ऑलरेडी पहले से ही वेलोसिटी नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में वो पहले से ही वेलोसिटी है, और उसमें भी एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव आ रहा है। क्लियर। ओके, सो ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 48. ओके, हियर इन क्वेश्चन नंबर 48, the speed time graph of a particle moving along a fixed direction is shown in figure. Speed time graph यहाँ पे दिया गया। ओके, the distance traveled by the particle between 2 to 6 सेकेंड, 2 to 6 सेकेंड के अंदर में पार्टिकल यहाँ पे कितना डिस्टेंस यहाँ पे ट्रैवल करेगा, वो हमें यहाँ पे क्या करना है, वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। 2 to 6 सेकेंड। सो हियर इन दिस पर्टिकुलर केस हाउ विल यू फाइंड आउट। तो यहाँ पे आप लोग अगर देखोगे तो ये जो टाइम इंटरवल यहाँ पे बताया गया है, सो 0 2 यहाँ पे कहीं पे होगा, 2 3 4 5 2 और 5 6 यहाँ पे कहीं पे होगा। क्लियर। तो 2 to 6 सेकेंड टाइम इंटरवल के अंदर में हम लोग यहाँ पे हमें क्या स्पीड टाइम ग्राफ दिया गया, डिस्टेंस कितना ट्रैवल करे वो हमें निकालना है। क्लियर। तो यहाँ पे 2 सेकेंड और यहाँ पे 6 seconds. So within 2 to 6 seconds, we need to find out the distance. So here in this particular case, how will you find out the distance? We know that from speed time graph, we will get the distance by finding out the area under the speed time graph. But here in this particular case, what will be the area under speed time graph? That we have to calculate. We have to calculate within the time interval from 2 to 6. That we should know. We will not calculate the area from the time within the time interval from 0 to 10. Within 2 to 6 we have to find it out, and that area will be this one, ये वाला केस, और यहाँ पे ये 6 मतलब लगभग यहीं पे कहीं पे होगा, that will be 6. Clear. So that means we have to find out this particular area. ये वाला एरिया हमें यहाँ पे निकालना है ये. So how will you find out this particular area? That means if we know okay, so first of all we need to find out the velocities at 2 second and velocities at 6 second. 6 सेकेंड में जो वेलोसिटी होगा और 2 सेकेंड में जो वेलोसिटी होगा वो अगर हम मिल जाएगा तो हम एरिया निकाल सकते हैं. ओके फाइन. तो नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज द वेलोसिटी at 2 second that we will calculate. Okay, so as if we see the graph clearly here in this particular case, from 0 to 5 second time interval the graph is straight line. That means acceleration will get constant acceleration. Then what will be the acceleration? We'll get the acceleration from the slope of the graph. So
slope of the curve, slope of the line from 0 to 5 second interval. सो 0 to 5 सेकेंड इंटरवल में जो लाइन है उसका स्लोप कितना होगा, तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0 to 5 सेकेंड, so slope m will be how much, so it will be y2 minus y1 upon x2 minus x1. so यहाँ पे हमने कितना लिखना है, so v2 minus v1 divided by t2 minus t1, because time is taken on x-axis and speed is taken on y-axis. so final velocity is 12 minus initial velocity is 0 divided by final time is 5 minus initial time is 0, so 12 upon 5, so how much it will be, so 5 to the 10 and 5 4 the 20, so 2.4 meter per second square. so acceleration in this particular time interval 0 to 5 is so acceleration is 2.4 meter per second square. okay, fine. Then what we need to find out, what is the velocity at 2 seconds. so initial velocity u is 0 and time t is 2 second. then v final velocity v is equal to u plus at, because it uniformly accelerated motion, so u is 0 plus acceleration is 2.4 into time is 2, so it will be 4.8 meter per second. so velocity over here is coming to be how much, it is coming to be 4.8. clear. Similarly over here what we'll do, we'll try to calculate the velocity at 6 seconds. so velocity at 6 सेकेंड्स, 6 सेकेंड पर वेलोसिटी कितना होगा, तो इसके लिए हमें कौन सा लाइन लेना है, हमें वो ये वाला लाइन लेना है. क्लियर. जहाँ पे आपका जो एक्सेलरेशन यहाँ पे नेगेटिव है वो वाला लाइन लेना है. क्लियर. तो उस लाइन पे एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो पहले तो एक्सेलरेशन निकाल लेना है. तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, स्लोप ऑफ द लाइन within the time interval of 5 to 10 सेकेंड. 10 सेकेंड का जो टाइम इंटरवल 5 to 10, उसमें जो लाइन है वो लाइन का स्लोप कितना होगा. तो स्लोप वही फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है. तो स्लोप m which will be nothing but same v2 minus v1 divided by t2 minus t1. ओके, सो हियर इन दिस पर्टिकुलर केस ये जो लाइन है इसमें हम देखेंगे तो ये यहाँ से शुरू होगा और यहाँ पे ख़त्म होगा. तो ये पॉइंट पर वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 12 और फाइनल वेलोसिटी कितना हो रहा है 0, और इनिशियल टाइम कितना है 5 सेकेंड, फाइनल टाइम कितना है 10 सेकेंड. सो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी ओवर हियर v2 इज 0 माइनस v1 इज 12 डिवाइडेड बाय final time is 10 minus initial time is 5, so it is minus 12 upon 2. so how much we are getting initial, okay, initial it's okay, fine, okay, 5, it is not, we are not dividing 10 by 5, it is 10 minus 5 is 5, so it will be how much, it is coming out to be how much will you get, 5 to the 10, okay, 5 to the 10, so 5 4 ja 5 4 ja, okay, 24, okay, same. so how much will be getting 2.4 meter per second square. that means acceleration, which okay here it is negative, so minus 2.4 meter per second square acceleration. Clear. so let it be, here it is a1 and here it is a2, this is a1. okay, so then what will be the velocity at 6 seconds? at 6 seconds, so velocity at 6 seconds will be equal to initial velocity u plus at. तो यहाँ पे हमें a2 लेना है. क्लियर. तो इनिशियल वेलोसिटी हमें कहाँ पे लेना है, इनिशियल वेलोसिटी 5 पर हमें मालूम है, तो क्योंकि हम इसी लाइन का ही लाइन
का जो एक्सीलरेशन है उसी से हमें फाइनल वेलोसिटी निकालना है। तो इनिशियल वेलोसिटी हमें कितना लेना है 12 प्लस एक्सीलरेशन इज -2.4 और टाइम इंटरवल कितना होगा 5 से 6 तक का टाइम इंटरवल कितना होगा 1 सेकेंड। सो फाइनली इट विल बी 12 माइनस 2.4 so it will be coming out to 12 minus 2 that is 10 10 minus 0.4 is 9.6 meter per second. So finally over here velocity is coming out to be how much 9.6 clear. तो यहाँ पे velocity कितना आ रहा है 9.6 okay fine. So right now what we'll do is we are getting the figure to be like this. तो यहाँ पे ये जो केस है ये इसमें हमें एरिया भी निकालना है। तो ये जो फिगर है ओके नो प्रॉब्लम हम इसी में ही कर लेते हैं। ये जो केस है क्लियर। तो इसमें अभी एरिया निकालना है। तो ये कैसा है फिगर, तो हम एरिया कैसे निकालेंगे, तो इसको हमें क्या कर सकते हैं हम इसको अब अगर हम फिगर को अच्छी तरह से देखेंगे तो ये जो एरिया हमें निकालना है इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ये वाला पार्ट, ये एक पार्ट हुआ क्लियर, और दूसरा जो पार्ट होगा वो ये सेकेंड पार्ट विल बी दिस वन, ये दिस वन, ये दोनों पार्ट क्लियर, ये दोनों पार्ट को हम ले सकते हैं। तो ये 1 है और ये 2 है क्लियर। ये दोनों पार्ट का हमें यहाँ पे क्या निकालना है, विल फाइंड आउट द एरिया ऑफ 1 एंड 2, ये दोनों क्लियर। अच्छा ये दोनों कैसा दिख रहा है, एक ट्रापेजियम टाइप का दिख रहा है क्लियर। सो एरिया ऑफ 1, एरिया ऑफ 1, तो ये इसका एरिया कितना होगा, ये एक ट्रापेजियम में हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स अगर देखेंगे तो ये वाला साइड और ये वाला साइड ये दोनों पैरेलल है, तो ये साइड कितना है 4.8, 4.8 प्लस ये साइड कितना है 12 यहाँ पे 12 इंटू हाइट, हाइट that means here height will be this one 2 to 5, 2 to 5 is this is 3, so यहाँ पे ये कितना है 3, तो इसका वैल्यू कितना मिलेगा हम लोगों को, we will get this value as 12 plus 4 that is 16, 16.8 by 2, 16.8 by 2 into 3, so that will be coming out to be 2 8 and this is 4, 16 and 2 for 8, so 8.4 into 3 and that value will be coming out to be how much, 25.2, that value will be 25.2, so this is the 25.2 and area that will give us the distance covered clear. And similarly if we will try to find out the area of 1 area of 2 क्लियर, 2 का एरिया अगर हम लिखेंगे तो एरिया ऑफ 2 कितना होगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स यहाँ पे कितना है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब ये एक साइड और ये दोनों साइड ये पैरेलल है, तो ये कितना है ये 9.6 और ये कितना है 12, सो 12 प्लस 9.6 इंटू हाइट, हाइट कितना है यहाँ पे 1 बिकॉज 5 से 6 हाइट ले रहे हैं हम लोग, तो ये वैल्यू कितना आएगा, that value will be 12 plus 9.6, so 12 plus 9 that is 21, so 21.6 divided by 2 and that will be coming out to be how much, 2 यहाँ पे कितना आएगा 2 10 20, so that will be 10.8 क्लियर। सो ये कितना आएगा 10.8 के आसपास, 2 8 16, सो 1 हाथ में, तो फिर 2 ओके 2 फाइन, सो 2 0 यहाँ पे 1 आएगा, तो 2 1 2 ओके, तो 10.8 मीटर। सो फाइनली हियर इन दिस पर्टिकुलर केस डिस्टेंस traveled within the time interval 2 to 5 second is 25 meter and distance traveled within the time interval 5 to 6 is 10.8 meter. That means this is the distance traveled within
the time interval of 2 to 5 seconds, and here this is the distance traveled within the time interval 5 to 6 सेकेंड, 5 से 6 सेकेंड का जो टाइम मीटर है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, so finally here in this particular case what we'll do, we'll find out the total distance will be how much, 25.2 plus 10.8, so how much that will be, so 8 to the 10, so 5 plus 0 5 plus 1 that is 6, so 236, so total distance travel is 36 meter. So let us check the answer. Total distance travel is 26, 36. 36 is the correct answer, so neither or rest others will be correct. Okay, moving to question number 49. The given acceleration time graph represents which of the following physical quantities. ओके फाइन, अगर हम इस ग्राफ को देखेंगे तो इसको पहले हम डिस्क्राइब कर लेते हैं कि ये ग्राफ क्या बोल रहा है यहाँ पे। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ यहाँ पे है, तो ये ओरिजिन है जब टाइम इज इंक्रीजिंग, टाइम यहाँ पे बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन 0 0 0 0 यहाँ तक 0 है, यहाँ तक एक्सेलरेशन क्या है, यहाँ तक एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 है, और वैसा ही यहाँ से यहाँ तक का टाइम इंटरवल में एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है, 0 है। और फिर क्या हो रहा है, इस वाले जो टाइम इंटरवल पे क्लियर acceleration is first increasing at a constant rate and after that it is decreasing at a constant rate. क्लियर मतलब एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे इंस्टेंटली क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन ऑल ऑफ ए सडन, मतलब अचानक क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है और फिर डिक्रीज हो रहा है। क्लियर, और वो भी बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए। तो पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन सा स्ट्रेट लाइन यहाँ पे उसको डिफाइन कर रहा है। ए क्रिकेट बॉल मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, क्रिकेट बॉल मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड कब होगा, जब एक्सेलरेशन 0 होगा। ओके ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 होना चाहिए। इज हिट विथ ए बैट से हिट किया गया फॉर ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये हो सकता है क्या हो रहा है, जब एक बॉल को हम बैट से हिट करते हैं तो क्या होता है, अचानक उसके ऊपर एक्शन रिएक्शन वहाँ पे होता है। तो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए ड्यूरिंग हिटिंग ऑफ द बॉल विद द बैट, तो वहाँ पे क्या होता है, उसमें इम्पल्स आता है। क्लियर, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए उसमें चेंजेस आता है, बहुत जल्दी उसका एक्सेलरेशन हो जाता है, फिर उसके बाद रिटार्डेशन होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, फाइनली वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है। क्लियर, तो ये इसको इंडिकेट कर रहा है। क्लियर, नेक्स्ट, बॉल इज फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। अगर बॉल मान लो कि फ्रीली फॉल कर रहा है, दैट इज फ्रीली फॉलिंग केस, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट विल बी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होना चाहिए, एंड दैट वैल्यू विल बी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन कहीं पे 0 तो नहीं होगा वहाँ पे, वो वाला केस में, तो ये तो नहीं होगा। ए कार मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑन ए स्ट्रेट रोड, भाई कार तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, तो उस केस में तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा ना, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो हमेशा एक्सेलरेशन क्या होगा, 0, तो हमेशा के लिए एक्सेलरेशन 0 होगा, तो यहाँ पे तो एक्सेलरेशन नहीं आएगा, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट, फुटबॉल इज किक्ड इनटू द एयर वर्टिकली अपवर्ड्स। क्लियर, फुटबॉल को क्या हो रहा है, उसको किक किया जा रहा है, मतलब उसको इनिशियली कुछ वेलोसिटी देकर उसको ऊपर की तरफ छोड़ा जाए, तो मोशन अंडर ग्रेविटी वाला केस आ रहा है। तो फुटबॉल को क्या किया जा रहा है, यहाँ पे फुटबॉल को इनिशियली कुछ वेलोसिटी देकर छोड़ा जा रहा है। क्लियर, तो देन दैट मीन्स व्हाट विल हैपन, इट विल मूव अपवर्ड एंड आफ्टर दैट विल कम टू द ग्राउंड। क्लियर, यूटर्न लेके ग्राउंड का आएगा, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, वही 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये हमें लेना है। तो हमें तो यहाँ पे तो एक्सेलरेशन कहीं भी 0 नहीं होगा, तो देन इट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। तो फाइनली ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 50 over here in this particular case,
Okay, here in this particular case, what it shows a particle moving along x-axis subjected to 3 intervals of acceleration. यहाँ पे 3 टाइम इंटरवल पे एक्सेलरेशन को शो किया गया है. रैंक द इंटरवल अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन वेलोसिटी दे प्रोड्यूस इन द पार्टिकल. तो ये जो अच्छा, ये जो ग्राफ हम लोग अभी देखेंगे यहाँ पे पहला जो सेक्शन यहाँ पे डिफाइन किया गया है 1, ये वाला सेक्शन पे यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन इज ऑलमोस्ट 5, क्लियर, कांस्टेंट है. दैट मीन्स विद इन 1 to 3 सेकेंड ऑफ टाइम इंटरवल, 1 से 3 सेकेंड का जो टाइम इंटरवल है यहाँ पे, मतलब 2 सेकेंड का जो टाइम ड्यूरेशन है, उसमें एक्सेलरेशन कितना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और सेकेंड सेक्शन अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो इसमें 4 to 8 सेकेंड का जो टाइम इंटरवल है, दैट मीन्स विद इन द ड्यूरेशन ऑफ 4 सेकेंड द एक्सेलरेशन इज कमिंग टू बी 2. यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है 2, क्लियर. एंड थर्ड जो सेक्शन है जो कि 9 to 10, मतलब विद इन द इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड, एक्सेलरेशन कितना आ रहा है 7. यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है 7, क्लियर. तो इस वाले पर्टिकुलर केस में इंटरवल में पूछ रहा है चेंज इन वेलोसिटी. तो एरिया, अगर हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ले रहे हैं तो वी नो दैट एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ gives the change in velocity. वेलोसिटी में कितना चेंजेस आ रहा है वो हमें बताएगा, क्लियर. तो अगर पूछा गया कि इंस्टेंटली 2 सेकंड पे कितना वेलोसिटी है, क्लियर, या फिर बाकी वो अलग केस है, लेकिन यहाँ पे एरिया जब हम निकालते हैं तो वो हमें क्या बताएगा, चेंज इन वेलोसिटी, क्लियर. तो इसमें इस वाले पर्टिकुलर केस में पहला जो सेक्शन है 1, उसमें एरिया ऑफ वन सेक्शन 1, इसका एरिया कितना होगा. तो सेक्शन 1 का एरिया हम कैसे निकालेंगे, तो सिंपली व्हाट, ये एक रेक्टेंगल टाइप का है, तो बेस इनटू हाइट, क्लियर. तो बेस यहाँ पे कितना है, बेस सिंपली बेस इनटू हाइट कर लेंगे यहाँ पे. तो बेस इज 3 - 1 दैट इज 2 इनटू हाइट इज हाउ मच, हाइट इज 5. सो 2 5 जा 10, तो एरिया कितना आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड. सेक्शन 2 अगर हम लेंगे, सेक्शन 2 का एरिया कितना होगा, तो बेस इंटू हाइट सेम फॉर्मूला, बेस इंटू हाइट हम करेंगे तो बेस कितना है 8 - 4 दैट इज 4 इंटू हाइट इज हाउ मच, हाइट इज कमिंग आउट टू बी 2. सो 4 2 जा 8 मीटर पर सेकेंड. एंड सेक्शन 3 का एरिया अगर हम निकालेंगे तो उसमें चेंज इन वेलोसिटी कितना आ रहा है, सो सेम बेस इंटू हाइट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो बेस कितना है 10 - 9 दैट इज 1 इंटू हाइट इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, हाइट इज 7, तो it is 7 meter per second. So change in velocity, so all these areas indicates the change in velocity. That means this one indicates the change in velocity in 1, this one indicates change in velocity in 2, and this one indicates change in velocity in 3. Okay, so finally which means they produce the parallel, the greatest first सबसे ज़्यादा बड़ा कौन सा है 1, क्लियर. उसके बाद कौन सा होगा 2, देन उसके बाद कौन सा आ रहा है 3, है कि नहीं. ओके, फिर से चेक करते हैं, ठीक है कि नहीं. तो ये 9 to 10 1, और यहाँ पे ये हाइट कितना है 7, ठीक है. ओके, यहाँ पे ये 4 है और यहाँ पे 2 है, 8 आ रहा है, ठीक है. सेकंड का 8 आ रहा है और थर्ड का कितना रहा है, ये 5 है और ये 2 है, ठीक है 10. सो 10 8 7, तो ग्रेटेस्ट किसका है 1. सो फ्रॉम 1 to 3, 1 इज ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3, 1 is greater than 2 greater than 3, that means option D will be the correct one. Okay,